प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सट्री ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बातें की थी, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इम्पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ एक्सट्री कर्व। ओके, अब एक्सट्री कर्व में भी आपके पास कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे जो पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका लाइक दिस। ओके, सो इन दिस फिगर यू आर सीइंग दिस that at the particular point the displacement time is stable now. In this figure, at a particular time the displacement of the particle is increasing. ऐसा पॉसिबल सर क्या है कि आपको फिक्स टाइम दे दिया गया है और टाइम क्या कर रहा है, एक फिक्स 5 सेकंड के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। टाइम अगर आपका फिक्स है तो उस फिक्स टाइम पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, फिक्स होगा। सिंपल सी बात है। टाइम ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टाइम पकड़े हो गया 5 सेकंड, ऐसा है 5 सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या इंक्रीज होती जा रही है, पॉसिबल नहीं। ओके, सेकंड ग्राफ is like this at particular time, at particular time। यहां पे ग्राफ आप कर्व में इन दिस फिगर आपको क्या है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी दो पोजीशन में आपको मिल रही है, दिस x1 एंड दिस इज x2। अब ऐसा पॉसिबल है क्या, एक टाइम पे आपको दो पोजीशन मिल सकती है क्या, पॉसिबल नहीं। ओके, एंड लास्ट वन इट इज लाइक दिस। अब इसमें क्या हो रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग बट द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि आपकी डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। ठीक है, टाइम इंक्रीज कर रहा है तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। ओके, सो दीज आर द 3 ग्राफ्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर द एक्सट्री कर्व। ओके, सो चलो इधर बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। Let's start the velocity time graph. Suppose particle is moving with the uniform velocity. This is the curve for the uniform velocity. This is v and t. So let at the point t1, suppose at time t1 it will have some velocity. Let this is point A. It will have velocity v1. अब t1 पे at t1 velocity is v1 and at t2 velocity is v2 and this is point B. So just extend this line. Let it meets at point C, C पे मिल रही है तो यहाँ पे थीटा, एंगल थीटा, दिस एंगल will also be theta. So this is a right angle triangle. If this is T2 and this is T1, so remaining distance will be T2 minus T1. So this length will be T2 minus T1. Okay, and here if this is V2 and this is V1, so the remaining distance will be V2 minus V1. It is clearly visible. So now from triangle BAC, so just apply tan theta here. Apply tan theta is equal to perpendicular over base, perpendicular is BC and base is AC, BC over AC.
So BC is what? BC is what? This V2 minus V1, and this is T2 minus T1. Okay, V2 minus V1 over T2 minus T1. So the tan theta is equal to delta V by delta T, and we know that delta V by delta T is what? Acceleration. So this is A. So A is equal to tan theta. What does it mean? Tan theta is what? Slope of velocity time graph. This is slope of velocity time graph. Slope of BT graph gives you acceleration. Okay. So this point one must be note down कि आपका जो velocity time graph का जो slope होगा वो क्या देगा? Acceleration देगा. Okay. So this is the first point. Let's go to the second point. आपका velocity time graph is very important. Okay. Suppose second point is it is like this: velocity and time. Suppose at time t1, it will have a constant velocity. This is, you are seeing this, the velocity is, अभी बताया क्या कि velocity time graph का slope क्या देगा? Acceleration देगा. यहाँ पे slope क्या है? इसमें 0, तो यहाँ पे acceleration क्या होगा? 0, because tan 0 is 0. चलो इस point में suppose करो, this is point A, this is B, and at time t2 it will have A, B, C, D. So it is forming a rectangle. It is forming a rectangle here. So find the area of a rectangle ABCD. Area of rectangle ABCD is equal to what? Length into breadth. छोटे से बच्चे को पता होगा, आप तो 11th standard में हो. Okay, L cross B. Length is what? T2 minus T1. This length is T2 and this length is T1. So the remaining distance will be T2 minus T1. Okay, T2 minus T1 cross width. Width is this length and this is B. So sorry, B. So what is this? Velocity into change in time. Velocity into delta t. So velocity, we know that velocity is equal to distance upon time. So displacement over time. So displacement will be velocity into time. So here velocity into time is equal to what? Displacement. Okay. So area of rectangle, or we can say that area under the curve gives you displacement. Means area under the curve of BT will give you what? Displacement. Okay, these are the clear. Okay, let's go to some find out some numericals or some examples. Okay, so few graphs are here. First graph, we have seen this, that this is VT graph. Okay, this is VT graph, velocity time graph. अब यहाँ देखो, at this point or this point or this point, whatever, angle is same, theta and theta. At everywhere, angle is theta. So we can say that acceleration is what? Theta is constant. So the tan theta will be also constant. The value of tan theta will also constant. Suppose this theta is 45.
So at every point the tan 45 will be 1. Okay. So acceleration is tan theta. Okay, that will also constant. So we can say that acceleration is constant. Acceleration is constant. Okay. Second, if it is parallel to the x-axis, if it is parallel to the x-axis, अब x-axis के parallel कर दी line draw करनी, तो at this time theta is equal to 0 and tan 0 is 0, means acceleration is 0. अब acceleration is 0 का मतलब ये नहीं है कि velocity 0 हो गई, okay? Acceleration 0 का मतलब क्या होता है? Doesn't mean velocity is 0. Velocity क्या रहेगी? Constant रहेगी, because acceleration is what? Change in velocity with respect to the time. तो change in velocity क्या है? वो 0 है ना, तो डेल्टा v is equal to 0 होगा. Suppose तो a is equal to dv by dt is equal to 0. Okay, so dv by dt is equal to 0. It means dv is equal to 0 and v is equal to constant. ठीक है ना? यहाँ पे acceleration क्या है? Acceleration is 0, but particle is moving with a constant velocity. Okay, so clear है इधर? Next पे आते हैं. Okay, third is if this is like, so here if you draw theta 1 and this is theta 2, so here theta 2 is greater than theta 1, theta 2 is greater than theta 1, velocity time graph. So tan theta 2 will also be greater than tan theta 1. So acceleration at point is this, suppose a and b. So tan theta 2 means a2 will be greater than a1. So particle is moving with increasing acceleration. ये ग्राफ होगा, वो क्या होगा? Particle is moving with increasing acceleration. Okay, next, if it is like this, here theta 1 and here theta 2. In this case, theta 1 is greater than theta 2, so it will be that tan theta 1 is greater than tan theta 2. So a1 is greater than a2. Means body is decreasing acceleration. Body have decreasing acceleration. Okay. So note it down. Suppose we have been like this, that like this, theta is greater than 90 degree. This is velocity time graph. Okay, theta is greater than 90, so we already know that if theta is greater than 90, so tan will be less than 0. The value becomes negative. Suppose this angle is 135. Suppose theta is 135. Okay, so tan 135 will be what? Tan 90 plus 45. Tan 90 plus 45. So tan 90 plus 45, tan 90 plus theta is equal to minus cot 45. Minus cot theta, that is equal to minus. So you are getting, if angle is greater than the 90 degree, so the value of tan theta is becomes negative. So we can say that the acceleration is negative.
So we can say that acceleration is less than 0. Okay. So there are some questions related to this. Okay. Let's do one numerical here. Suppose you have given this like this. If this is 20 meter per second, okay, this is velocity and this is time graph, velocity time, speed time, whatever. So it is 0, 5, 10, 15 and this is 20 in second. Okay, so how will you find the total displacement covered by the particle? You have to find the total displacement. Okay, from O, A, B and C. You have to find total displacement. Okay. So how will you find the total displacement? You know this. आप इस ग्राफ को देखो. So it is like trapezium. It is like trapezium. So what is the area of trapezium? तो आप दो मेथड से कर सकते हो. It is triangle, it is rectangle, and it is again triangle. तो आप triangle का एरिया निकालो, फिर rectangle का एरिया निकालो, then triangle का एरिया निकाल के सम अप कर दो सबका एरिया. Then you will find the displacement. But if you know the area of trapezium, so put in direct formula. Solution is area of trapezium. This one what? क्या होता है trapezium के लिए half into sum of parallel sides into height or distance between the sides. This height. Okay. So half into sum of parallel side. So parallel side is 0 to 20 and this sum of parallel side is what? One side is this 20 and this is what? 15 minus 5, that is 10. So sum of parallel side will be 20 plus 10 into height is what? 20 into 20. So it will be cancelled out 10, 30 and multiplied by 10, that is 300. That is 300 meter square. This will be the area and 300 meter will be the displacement covered. Okay, for meter only. 300 meter. It will be the displacement. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना. आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको उसको ऐसे कर्व दे दिया गया, आपको एरिया फाइंड आउट कर दिया गया. आपका वीटी कर्व है, वीटी कर्व से एक्सटी कर्व पूछ रहे हैं. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सटी कर्व से वीटी कर्व से एटी कर्व, आपको एटी कर्व गिवन है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, उसे आपको वीटी ग्राफ में कन्वर्जन करना है. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे. ठीक है, कि आपको ये आपको सपोज करो वीटी कर दिया है, इसे एक्सटी कर्व कैसे कन्वर्ट करें और इसे एटी कर्व कैसे कन्वर्ट करें. ओके, थैंक यू गाइस वाचिंग दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में